to counter these snipers, especially at night time, to fight with them. Other thing is that we have to fight within the country, and from last couple of years we are fighting it. We have hosted Afghan refugees for long time, and I think it's now the proper time to ask them to settle down in their own country. If you see Afghanistan are the borders of different countries, but why is insurgency in Pakistan? We have to look into it also. Others all for, and the now new growing things, there are a lot of elements engaged who are against Pakistan, who are against CPEC, who are against China. They all have battlefield in Kabul, and we have always asked the Kabul government to engage should not be used against Pakistan, but they haven't taken that much serious these issues, and 70 to 80% insurgency in Pakistan has been done through Afghanistan, or you can say Kabul. We have long border with Afghanistan. It's fact that we cannot control all the border. We have got, you can say, flow of things, the military is crossing from Afghanistan to Pakistan. But the world also has to look into it also, because when they are fighting war against terror in Afghanistan, they need Pakistan. But when they leave Afghanistan, when they, you can say, lose the battle in Afghanistan, they always leave Pakistan like this. We have a couple of last experience also, and this time also. Now Pakistan alone is fighting extremism and terrorism. It's not the, like I say, a job of Pakistan, because we have fight war against terror, and you are part and you are ally of NATO forces. But when their job is done, they always leave Pakistan like this. I think the world has to come forward for this specific issue of extremism and terrorism in Pakistan. Now if we come to Pakistan, we have a lot of issues in Pakistan also after the merger of FATA, which we called is now merged districts. State has promised the people of merged districts that we will spend like 2% of NFC, unofficially 2% of NFC for the development of merged districts, or you can say 100 billion rupees per year. If you look into 2%, it is around about 250 billion rupees. But if you say we have to spend 100 million rupees per year, it's not been spent. And after the merger, because we don't have FATA saturated things, it's gone to the provincial government. And when it's natural fact, when the money comes to provincial government, where they are in deficit or they want to use that money in some other head, they are not using it, for example, for the merged districts, they spend it other. So there is a lot of resistance in merged districts also, because when they come to Islamabad, when they go to Lahore, when they go to Karachi, when they come to Peshawar, the youth, the largest number of youth in Pakistan is in Khyber Pakhtunkhwa. When they see these type of things, the development, then they ask questions also. Because right now they are also out of, you can say, 4G, 3G, or whatever you can say, they are out of, you can say, social media also. The students studying in universities, if they are studying in Qaid University here, or Allama Iqbal University here, or any university in Pakistan, when they go back on holidays, they can't do their projects because they don't have internet facilities. They have to settle down in Peshawar, or in other, they have to rent flat or houses in some of the big cities, and they have to work for their thesis or PhD or for their research work in the any of the city. So we have also lack of thing, because thing is we have lack of governance also, because civil government has to be in front also.
We don't have to give space to anybody else. If we say we want security forces, army for earthquake, we want army for floods, we want army for polio drops and everything. So if we are giving space, then we should not, in future, we should not also complain that why are they encroaching. If every institution do their own work, whatever it's in constitution, I think if we do our job, everything will be settled down. For my media, I'll turn to Urdu. पिछले दिनों एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी इस इस्लामाबाद में हुई, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमेशा हम ये बात कहते हैं कि हमें इत्तेहाद के साथ और मजबूती के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर मिलिटेंट्स का मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी एहसास की ज़रूरत है। जब आपके अंदर एहसास पैदा होगा तो फिर आप इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंसी है, क्वेश्चन ये होता है कि क्यों है? बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर तरक्की नहीं है। 1991 एकॉर्ड के बाद पानी की जो तकसीम हुई, जिसमें चारों सूबों को पानी का शेयर मिला, उसमें तकरीबन 3 सूबों की नहरें कंप्लीशन, 2 सूबों की नहरें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिंध और पंजाब की, बलूचिस्तान की कंप्लीशन पे है, और खैबर पख्तूनख्वा की भी शुरू भी नहीं हुई। अगर आप रेनी कैनाल को उठाएं, अगर आप थल कैनाल को देखें, अगर आप कच्ची कैनाल को देखें, कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे है बलूचिस्तान की, थल और रेनी कैनाल बन चुकी है, और चश्मा लिफ्ट कैनाल जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ पानी का शेयर मिलना था वो आज तक नहीं मिला। अगर शेयर नहीं मिला, अगर रियासत वो पानी इस्तेमाल करे, जो भी सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस पानी के जो हम कहें जो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेवेन्यू क्या खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहा है? अगर आप देखें कि हम ये सवाल हमारी यूथ हमसे करती है जब हम खैबर पख्तूनख्वा में कहीं यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, किसी फोरम पे जाते हैं, कि अगर इस पाकिस्तान में 90,000 बैरल तेल डेली की बुनियाद पे बन रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 50,000 बैरल खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है, लेकिन आज तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई और रिफाइनरी नहीं है। अगर हम पानी की बात करें या बिजली की बात करें, इस वक्त सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है गालिबन 1 या 100 रुपए के ऊपर, और हम वो रियासत को दे रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ा डैम दुनिया का तरबेला डैम, क्या उसके बाद हम कोई डैम बना सके तरबेला के बाद? हालांकि हमारे पास हाइडल की इतने साइट्स हैं, चीज़ें हैं, तो कभी वो सियासत की नज़र कुछ डैम्स हो जाते हैं, कभी नहीं बनने चाहते हैं। हम शॉर्ट रिलीफ की तरफ जाते हैं कि जी आप IPPs की तरफ चले जाएँ, शॉर्ट रिलीफ हो, लेकिन वो तो फर्स्ट एड के तौर पर है। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। दूसरी चीज़, अगर हम सस्ती बिजली कर रहे हैं या गैस के ज़ख़ायर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी पे सवाल होता है कि सबसे ज़्यादा फिर लोड शेडिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो बिजली की हो। तम्बाकू के काश्तकार अपना रोना रोते हैं कि उनका जो सेस फंड है वो इस्लामाबाद ले रहे, जो कि उनके ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं हो रहा। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो उठते हैं। हमारे जो है यूथ जो है वो सवालात डेफिनेटली वो करती है, अब जिस फोरम पे भी जाएँ ये इश्यूज़ जो है हमारे। फिर देखिए, इसमें सबसे गवर्नमेंट, उनके साथ साथ जब तक आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है कि हम हर कोई ये बात करता है कि जी हम आएंगे और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे, फिर जब देखते हैं MNAs MPs के मेरे इख्तियारात में तो कमी आ जाएगी और ये मेरे साथ पावर शेयरिंग हो जाएगी और इख्तियारात सारे लोकल गवर्नमेंट चले जाएंगे, तो एक डमी से निज़ाम बना लेते हैं। कहीं पे इलेक्शंस नहीं हो। अब पाकिस्तान में देखें, सिवाय गालिबन 2 सूबों के अलावा 2 सूबों में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ही नहीं है, और न वो चाहते हैं। और जिन सूबों में इलेक्शंस हैं, मेजॉरिटी ने किया है कि जो इख्तियारात उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को देने थे, उनको पता चला कि हमने तो पहले इलेक्शन में बहुत दावे कर लिए, अब इनके इख्तियारात वापस ले लेने चाहिए।
اور وہ ایک قسم کے ایک ڈمی لوکل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کوئی فنڈز نہیں. فار ایگزامپل میرے صوبے میں وعدہ کیا تھا کہ پی ایف سی کے بعد اپنا لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد پی ایف سی سے جو ہمارا پروونشل فائنینس کمیشن ہوگا اس سے ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے لوکل گورنمنٹ کو ہوگی، لیکن نہیں ہو سکی. ابھی اگر ہم بات کریں این ایف سی کے حوالے سے، این ایف سی ایوارڈ دیکھیں مرجر آف فاٹا کے بعد جو خیبر پختونخوا میں آبادی بڑی جو ہمارے اوپر آئی، کیونکہ این ایف سی ہمیشہ آبادی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، غربت کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد این ایف سی آپ دیکھیں کتنے سالوں سال سے این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوا اور ہماری آبادی بھی بڑی. مرجر کے بعد ہمیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ 1% آف این ایف سی ایوارڈ ہمیں سیکیورٹی کے بنیاد پر ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی جو وار آن ٹیرر پہ ہمیں 1% آف این ایف سی ایوارڈ جو اس وقت تک ہمیں تقریباً 600 ارب سے زیادہ مل چکے ہیں، ہم اپنے ان سیکیورٹی فورسز پہ، اس پولیس پہ، اس کی پولیس کی اپ گریڈیشن پہ، اس پولیس کی پروٹیکشن پہ نہیں لگا سکے جو ہمیں لگانا چاہیے تھا. پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں تو ہم اپنی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کس جگہ پہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہم اگر فار ایگزامپل روڈ بنا لیں یا ہم کسی پل بنا لیں یا ہم کوئی اور چیزیں بنا لیں تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت ٹھیک ہے ہم جو وار آن ٹیرر ہے یا جو سیکیورٹی ہے وہ چیلنجز جو ہے وہ چلتے رہیں. جہاں پر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن بٹوین اس صورتحال میں جب ہم آپ سیکیورٹی کی صورتحال کہیں یا آپ بولیں کہ ہم اس وقت ایک جنگ میں ہیں یا ہم اس چیز کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے پروونس اور فیڈرل کا جو ہے کوآرڈینیشن آپس میں. جب تک فیڈریشن اور صوبے آپس میں پراپرلی کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ ہمیں اتحاد سے پہلے احساس کی ضرورت ہے. اگر یہ احساس دونوں گورنمنٹس کو ہوگا تو ہم یہ جو جنگ ہے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ جیتی ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، لیکن احساس کے ساتھ کہ واقعی ہم نے اس کو مل کر جو اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا ہے. پھر جب تک ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری ڈائلاگس کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمیں سول ملٹری ڈائلاگس کرنے چاہیے. ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ برین اسٹارمنگ کر کے ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے